Yes, guys, are you able to see question? No, sir. No, sir. Is it no for everyone? Yes, Kiran, Mehak, Jyotsna, Pratik, Puran, किसी को नहीं दिख रहा क्वेश्चन? Pura no. No, sir. What do you mean by open source? Are you able to see the question? Just type in chat. Don't speak up. Type. I need answers in Sir, type. I think open source means Type, anybody can type. use it. Okay, Pravalika, but type. I need to answer. I need answer in type. Amruta Varshini got first answer. Yes. Second, third. I'm waiting for guys. First is Amruta. What do you mean by open source? Amruta answered it. Don't worry whether it is right or wrong, but just type. Try. Your trying is your winning. What do you mean by open source? Only Amruta answered it. No one even tried. You are incapable of trying also, guys. Okay, I got answer from Bharat. Very good, Bharat. Perfect. More answers, guys. Type. You can even Google and copy paste. No problem. I am okay with that also. Go ahead. Shake of rose. Okay. Third is shake of rose. Puran. Padharia. Okay. Palak. Very good, guys. Sakshi. Good. Vinay. Very good. Very good. Vanshika. Perfect. Meghna. Very good, guys. You are going good. Great. Sakshi. Correct. Vinay. Good. GitHub. Okay. Arshada. Original source. Okay. Good. So I am getting really good answers now. Sakshi, as you can see, is tailor-made. Okay. So guys, do you know Tesla company, the car making company by Elon Musk? Yes, Okay. sir. So whatever the patents he have done, he made it open source to everyone. Exactly, open source means it is free to use and sell it commercially without giving any royalty. ओके ये फ्री टू यूज है तुम फ्री में यूज कर सकते हैं और जो सेल भी करते हैं और जब सेल करेंगे तो किसी पे नहीं करना पड़ेगा ठीक है पहले होता है हम किससे फ्री में मिल तो गया है पर अगर अपन सेल करेंगे तो किसी को पे करना पड़ेगा उसका रॉयल्टी ऐसा नहीं है इसमें ठीक है ओपन सोर्स मीन्स फ्री टू यूज एंड कैन बी सेल्ड commercially to any other person without giving any royalty to anyone clear what is open source. Yes, sir. Okay. Now the fourth point is powers 26% of the internet. It powers 26% of the internet. WordPress is so stable and easily customizable. It uses good quality of database. That's why WordPress is 26% of the internet websites are made on WordPress, and that's why we are learning WordPress. WordPress is stable. वेबसाइट ऐसे बार बार बंद नहीं होती है तो वर्डप्रेस इज स्टेबल इट इज इजीली कस्टमाइजेबल हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं इजीली इट यूज फ्रंट एंड बैक एंड टू अस है ना तो बहुत ही इजी में हम फ्रंट एंड वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं और वो स्टेबल भी रहती है दैट्स व्हाई इट पावर्स 20% ऑफ द इंटरनेट guys everyone read first point unmute everyone and read first point all of you together first point It is a content management system used to create blogs and websites. Used to create blogs and websites. second point Create primary Can be in HTML to MySQL and JavaScript. third point Software is Software free and is open software source. is free and open fourth source. point Power powered by 20% of the 20% of internet. the internet. ठीक है so I think everyone is able to understand all these 4 points can I go ahead faster yes, yes sir. and can I speed up my teaching now okay Yes, sir. so now here we need to see difference between blog and website okay what is blog and what is website can anyone tell the difference between blogs and website you can type in chat guys what is the difference between blogs and website blog versus website type in chat let's see who answers it fast in chat question answers in chat ब्लॉग्स क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है यू कैन गूगल इट नो प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट फ्रॉम गूगल बट ट्राई डू इट
Blog is for articles. Okay, I got answers from Vinay. And what about website? Vinay? Guys, please type fast. Chat. We are 29 here. Everyone. मेघना वलन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मेघना समझ में आ रहा है? आकाश, अमृता, अर्जुन, भारत, Yes, चारू, sir. हर्षदा, ज्योत्सना, Yes, sir. ज्योत्सना, ज्योत्सना, चारू, भरत, आर यू एबल टू Sir. अंडरस्टैंड? किरण, महक, निकिता, Yes, sir. निकिता, किरण, निर्मला, पलक, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स? पवन, पवन, हेलो पवन, पिंकी, पूजा, पूरण, राकेश, साक्षी, शेख, Yes, sir. Yes. ओके, पार्वतिका, सुहास, वंशिका, विनय, यश, okay. So I'm getting answers from first is Vinay. Blog is for articles. Okay. Websites we can access content. Bharat. Okay. Sakshi is third. Website is collection of web pages. Correct. Sakshi. Perfect. Amruta. Website is based on. Okay. Rakesh. Mehak. I can see answers from Rakesh, Mehak, Sheikh Afroz, Sakshi. Good guys. चलो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ. Just tell me guys. Name of this website. नेम ऑफ दिस वेबसाइट का नाम बताओ बस. आज तक. कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? तो देखते मोदी जी क्या बोल रहे हैं. कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग ओके. जनता को अवसर देते हैं. चलिए मोदी जी को बोलने दीजिए. अभी हम देखते हैं ये वेबसाइट है या ब्लॉग है. अभी ये बताओ. ये ब्लॉग. आज तक इस वेबसाइट और ब्लॉग. इवन यू कैन टाइप इन चैट गाइस फास्ट. ये तो बताओ वेबसाइट है या ब्लॉग है. ओके. एक वेबसाइट है. ओके. पूरन ब्लॉग क्यों है? अपने ब्लॉग. महक ने बोला ब्लॉग, पूरन ने बोला ब्लॉग. ओके. विनय, वलन, हर्षदा सबका आंसर आ रहा है. मुझे दो लोगों ने ब्लॉग बोला है. ओके. यस महक, पूरन, कैन यू प्लीज टेल व्हाई इट इज ब्लॉग? This blog means, ब्लॉग क्या होता है? कोई भी वेबसाइट पर या कोई भी ब्लॉग, जब भी टॉपिक्स रेगुलरली अपडेट होते हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक पर रेगुलरली कंटेंट हमें मिलता है, रिफ्रेश्ड कंटेंट. ओके. रिफ्रेशिंग कंटेंट हमें जब भी मिलता है तब उस वेबसाइट को हम ब्लॉग बोलते हैं. अब आपको लगता है कि वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है आज तक की, वो रेगुलर अपडेट होती रहती है? ये 4 साल पहले जो न्यूज थी वही आज भी है. कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है. कंटेंट रेगुलर अपडेट हो रहा है. क्लियर? हो रहा है नहीं हो रहा है कंटेंट रेगुलरली अपडेट? यस, नो, मे बी. पता ही नहीं सर. वर्कशॉप के बाद बताएंगे, कल बताएंगे. कंटेंट रेगुलर अपडेट होता है नहीं आज तक पे? रोज नई न्यूज आती है ना. जिस भी वेबसाइट पे रेगुलरली कंटेंट अपडेट होता है, रोज नए नए टॉपिक्स अपडेट होते हैं, ओके, उसे हम बोलते हैं ब्लॉग. तो आज तक एक ब्लॉगिंग वेबसाइट हम ऐसा बोल सकते हैं. उसका आगे भी बताता हूँ. आपको शायद कुछ डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा आगे. अभी ये वाली बताइए वेबसाइट. ये वेबसाइट कौन सी है? नाम बोलिए. व्हाट नेम ऑफ दिस वेबसाइट? Oyo. ओयो. 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 ओके. So is this a website or a blog? Yes. Blog. Okay. वेबसाइट. 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 यहाँ पे कोई कंटेंट रेगुलर अपडेट हो रहा है क्या? कोई टॉपिक इन न्यूज चैनल थोड़ा ना जहाँ पे रेगुलर अपडेट होगा. नो कंटेंट इज रेगुलरली अपडेटिंग. ओके. once they have made it, it will be remain same unless there is official like festive occasions, festivals. They will update the offers only, but not on particular topics, right? So that's why this Oyo is a website, but Hashtag is a blog. And one more thing is, all blogs are website.
but all websites are not blog. Clear? तो आज तक blog है, but it is as well as website भी है. So there is not a big difference. एक website पे ही हम मतलब बनता तो blog ही है, उसे बस नाम बोलते हैं. तो आज तक is a blog as well as website, but Oyo is just website. जहाँ भी आपको रेगुलर अपडेटेड कंटेंट दिखे वो होता है ब्लॉग. सिंपल. क्लियर? Yes, sir. आगे जाते हैं. अभी हम आगे होस्टिंग भी सीखने वाले हैं. होस्टिंग कैसे होता है, सर्वर कैसे होता है, वो सब भी सीखने वाले हैं.